एक प्राइवेट फर्म जो कि वेल नोन फर्म थी उस टाइम पर, उसमें काम करते थे। उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि यार मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, मतलब इस तरह का क्या सोचा? इवन दैट टाइम द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस was lower as compared to the private. Friends, welcome back to the Right Brain Family। और आज हम फिर से एक इंटरव्यू लेके आए हैं। ये CPWD में आर्किटेक्ट हैं और 2014 का जो डिप्टी आर्किटेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सर अपने बैच के टॉपर थे। तो इस पार्ट को हम इंटरव्यू के एस्पेक्ट से कवर करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस में जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं उनको मैं इसमें कवर करूँगा। पहले तो थैंक यू for joining us. Sir, can you please tell our audience something about yourself and what is your professional background? Good evening Yogendra जी, thank you ये चांस देने के लिए। जैसा आपने बता ही दिया है, मेरा नाम सचिन शर्मा है। मैंने 2007 में NIT हमीरपुर से BArch किया और गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद तकरीबन 8-9 साल I have worked with a multinational company in Gurgaon, and this Deputy Architect examination notification was advertised in newspaper on I think 2013. 12 or 13? 13. January 13. Okay. And in 2014, they shortlisted few candidates and they took our interview. Okay. And they declared the results. यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2015 से पहले एग्ज़ाम्स नहीं होते थे क्योंकि कैंडिडेट्स भी कम ही होते थे और जनरल शॉर्टलिस्टिंग होती वो एक्सपीरियंस बेस्ड पे होती थी। तो उस टाइम पर भी मुझे याद है कि आपके शायद 42 वैकेंसीज थी और 42 वैकेंसीज के अगेंस्ट में 41 वैकेंसीज थी, सॉरी। और उसके अगेंस्ट में जो कैंडिडेट्स उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे फॉर द इंटरव्यू, द लिस्ट वॉज अराउंड 250 इंटरव्यू में थे और तकरीबन 2000 टोटल एप्लीकेशंस आए थे। और उसमें उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ था उससे उन्होंने 41 को सिलेक्ट किया था डिपेंडिंग ऑन वैकेंसीज अवेलेबल इन वेरियस कैटेगरीज। तो 2014 में सर का सिलेक्शन हुआ और 15 में आई थिंक जून में सर ने डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, CPWD ज्वाइन किया, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस ज्वाइन किया। और इसके बाद सर थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि आपने इससे पहले भी कुछ एग्ज़ाम्स क्या अपीयर हुए थे या क्वालिफाई किए थे, तो उनके बारे में भी थोड़ा बताएं प्लीज़। हाँ, रिटन एग्ज़ाम मैंने आई अपीयर्ड फॉर GATE 2006 ड्यूरिंग माय कॉलेज period only when I was in 4th year. And there I secured 28 All India rank. That's great. And that was the only architecture exam. And after that this advertisement came. So it was around it was almost after 8 or 9 years you joined the service. I think you were 2007 pass out. Yes. Then in 2014 you qualified this exam, UPSC exam. Yes, absolutely. तो यहाँ पे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, हैव यू एवर डिस्क्वालिफाइड इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? इफ़ यस, हाउ डिड यू ओवरकम दैट फेलियर? आई थिंक आपने एग्ज़ाम ही बताया कि आपने गेट का दिया था और वो भी बहुत अच्छे मतलब रैंक के साथ आपने ऑल इंडिया 28 रैंक जो कि क्वालिफाई किया था। तो ये क्वेश्चन मेरा यहाँ से मैं अभी छोड़ देता हूँ। तो इसके बाद हम सीधे आते हैं डिप्टी आर्किटेक्ट का जो आपने 2014 का आपने इंटरव्यू जो दिया था, उसके लिए आपने अपनी प्रिपरेशन किस तरह से की थी? इंटरव्यू से पहले क्या तैयारी की थी जब आपका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था इंटरव्यू के लिए? तो वो थोड़ा सा अगर बताएं तो शायद हमारे ऑडियंस को ये क्लियर हो जाए कि वो इंटरव्यू में जो अभी बैठेंगे उससे पहले क्या क्या तैयारियाँ करनी है। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रिटन एग्ज़ाम से आप इंटरव्यू तक पहुँच पा रहे हैं जी, तो उनको एक बात समझनी चाहिए कि उनका नॉलेज टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है। अब जो इंटरव्यू कॉलिंग है, द पर्पस ऑफ इंटरव्यू इज़ टू जज योर पर्सनैलिटी, योर प्रेजेंटेशन, हाउ यू बिहेव इन such a setup, UPSC setup. And I prepared a very crisp portfolio of my selected
5 projects dealt or worked upon in my previous organization. वैसे अपने जो हमारे द राइट ब्रेन की जो फैमिली है उसको मैं बार बार बता रहा हूँ कि जो इंटरव्यू है यूपीएससी का इंटरव्यू जरूर नाम है उसका, लेकिन एक्चुअली वो पर्सनालिटी टेस्ट है, उस पर फोकस करें। हमेशा मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करें। मैं हमेशा बोलता हूँ आप अपनी पर्सनालिटी, अपनी एथिक्स, अपनी लाइफस्टाइल उस पर वर्क करिए। आप ऑलरेडी इतना एग्ज़ाम, रिगरस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अगर इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं तो आपके पास नॉलेज तो है। नॉलेज है। और तो चलिए, आपने स्टार्ट कर ही दिया है सर कि आपने पोर्टफोलियो में किस तरह से काम सेलेक्ट किए थे। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज़ गाइड अस ऑन पोर्टफोलियो प्रिपरेशन एंड सिलेक्शन ऑफ वर्क्स फॉर इंटरव्यू? I would like to prepare a very thick portfolio of yours. Okay. Just pick and choose those projects which you are thoroughly updated about and you have really worked upon, and so that any question pertaining to those projects you should be able to answer. They are not impressed by the quantity of projects you are showing. They are really impressed by what quality you have shown to them and what was your level of involvement in those projects. So I took 5 projects from my 8 to 9 years of private service, and I chose from all varieties of projects like residential also, commercial also, hospitality projects also, and I was very confident about those projects. Okay. So, and I got them printed on a project where I meant the portfolio which I prepared was very crisp, not in just a master plan, a few major plans. It was not more than of 8 to 10 pages. So it was on A4 or A3? A3, not more than 8 to 10 pages. Okay. Yes. यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको मतलब बताना चाहूँगा। इंटरव्यू हुआ था 2014 में, सर उसमें टॉपर थे और रैंक 1 थी। तो आप समझिए कि आपको कितना सिलेक्शन करना है वो आपको डिसाइड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने 100 काम किए होंगे, सर ने भी हो सकता है कि आपने ड्यूरिंग द कॉलेज भी बहुत सारे काम किए होंगे और 8-9 साल में आप समझ सकते हैं कि कितने सारे काम किए हों, लेकिन आपको 5 या 10 ऐसे काम ले जाने हैं जो कि आपके हैं और आप उनको जस्टिफाई कर सकें और सब कुछ आपको बताओ और आपका एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट उनमें होना चाहिए। एक चीज़ मैं और ऐड कर देता हूँ कि द पीपल हु आर नाउ रिक्रूटेड थ्रू एग्जामिनेशन, दे मे हैव अ वेरी less experience also. Okay. So they should be focused on their college time projects or thesis projects, very few of them which you are very thorough about it, practical knowledge wise and theory knowledge wise. That's it. मतलब आपका जो थीसिस का आपका जो मेन एक बीआर के टाइम का एक प्रोजेक्ट था थीसिस, या उस पहले भी आपने कुछ 1-2 छोटे काम किए हुए हैं उनको भी ले जा सकते हैं। और अगर आपने उसके बाद में बीआर के बाद में भी अगर कोई छोटा घर भी बनाया है तो आप, अगर आपने बनाया है और आप कॉन्फिडेंट हैं तो उसको भी उसका पार्ट बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। और एक्सपीरियंस का मैटर नहीं करता है इतना ज़्यादा, क्योंकि एक्सपीरियंस सर उस टाइम की है जबकि एक्सपीरियंस के बेस पे इंटरव्यू के लिए कॉल आती थी। अभी इंटरव्यू के लिए कॉल जो आती है वो एग्ज़ाम बेस्ड पे आती है। तो आप इस बात के लिए बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर रहिए कि आपका जो भी सिलेक्शन होगा उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। आपका पर्सनैलिटी उस पर्टिकुलर डे किस तरह का आप वहाँ पे आप अपना अपीयरेंस रखते हैं, अपने आंसर किस तरह से आप वहाँ पे देते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा और मैं डेप्थ में जाना चाहूँगा सर कि हाउ वाज द एनवायरनमेंट इनसाइड द इंटरव्यू हॉल, लाइक हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर, ऐसा कुछ थोड़ा बताएं कि वहाँ पे सेटअप किस तरह का होता है, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में एक्चुअली माहौल किस तरह का होता है, क्योंकि प्राइवेट इंटरव्यूज़ और यूपीएससी के इंटरव्यूज़ में बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो वो किस तरह का सेटअप था, क्या आप से एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो किस तरह के लोग उस टीम में थे? Like you already said, we were around 250 candidates who were called for the interview, and interview happened for around 4 days. So my interview date was the last day, and I reached the UPSC building at around 9 a.m. and
there we were made to sit in a batch of 8 to 10 people on a round table, and it was a period of scrutinizing the documents. Actually, initially the process was कि documentation उसी दिन होता था. आजकल documentation वो पहले से कर लेते हैं, तो हो सकता है कि वो phase ना मिले, लेकिन हाँ बैठेंगे भी लोग सब एक hall में. So the documents were matched between the copies and the originals. Okay. And I waited, I had lunch there, and at around 3 I was called inside the interview room. Okay. And I would be lying if I'd say I was not nervous. Yes, little bit, but I was very confident also. And I entered the hall, and there were 5 people were sitting, including chairman. इंक्लूडिंग चेयरमैन. लाइक हाँ, जो हमने पहले भी इंटरव्यू में आपको बताया था, मिस्टर कमल पासी का जो इंटरव्यू था, उसमें भी मैंने ये पॉइंट फोकसली मतलब आपको बताया था कि इंटरव्यू में 5 लोग होते हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन, और उसके चेयरमैन के अलावा जो लोग होते हैं उनमें कुछ आर्किटेक्ट्स भी होते हैं, कुछ और भी मेंबर्स होते हैं. तो 5 यहाँ पर भी 5 लोग थे इंटरव्यू में. जी. So they came from like ministry side, UPSC side, and the department side. Okay. And there was a person which I came to know who was just judging your. Yes. He was just silently sitting and observing. Okay. He was not asking any questions. So, first of all, I am now vaguely remembering, they asked for a brief introduction of myself. And then we started with the portfolio. I started showing my projects to them. And in my private experience, I was BIM trained, PIM trained, and I worked on live projects also. Okay. So the panel, one of the panelists, he asked me about questions about Revit and BIM. And I was pleasantly surprised about it. And one of the questions he asked, can we draw a sphere in Revit? Actually, I didn't, never had to draw a sphere. So I really said, I don't know. One of the main things, you have to be very honest in your approach. I showed them few of my Revit projects also, and they were happy. One thing they asked me about the low-cost housing techniques. What will be your thought process while you design a low-cost housing? So it was part of your portfolio, or yes, I did not a low-cost housing, but I did a township project, which has a plot ranging from very small, like 100 square yards, even 60 to 500 square yard houses. So I took a 60 square yard house to them. So I'm guessing they asked this question based on that planning. That means most of the questions were from your portfolio only. Portfolio only. जो आपका इंटरव्यू का रिज्यूमे जो भी है वहाँ से ही वो पिक करते हैं. Yes. जो आप उनको बताएंगे कि आपने क्या क्या किया है, वो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, तो वही बताएं, वही दिखाएं जिसमें आप एक्सपर्ट. अच्छा, इसमें एक पॉइंट और आया मेरे माइंड में भी. पोर्टफोलियो के साथ में क्या अलग से रिज्यूमे या सीवी ले जाना वहाँ मैंडेटरी होता है, या फिर आप लेके गए थे? मुझे याद नहीं है कि मैं सीवी का कॉपी लेकर गया था, बट मोस्ट लाइकलीहुड आई हैव टेकन द सीवी आल्सो अलोंग विद मी. ओके, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ डिड यू एक्चुअली हैंडल योर इंटरव्यू? वाज इट एक्सेम्परी काइंड ऑफ, और जस्ट वेंट अकॉर्डिंग टू योर प्लान? जैसे आपने बताया क्वेश्चन, मतलब आपने ही बताया कि आपका जो पोर्टफोलियो था वहीं से उन्होंने क्वेश्चन पिक किया. आपने टाउनशिप दिखाई, उन्होंने लो कॉस्ट हाउसिंग पूछा. आपने बिम दिखाया, उन्होंने स्पेयर पूछा. मोस्टली आपके क्वेश्चन इसी तरह से थे. मैंने एक होटल का प्रोजेक्ट से डाटा गोवा का नया बिल्डिंग आई हैव बीन वर्किंग ऑन दैट टाइम. सो दे आस्क्ड अबाउट द किचन प्लानिंग इन अ होटल. सो दे विल पिक क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ओनली. यस. सो एक और क्वेश्चन है, कुछ इंटरव्यू से थोड़ा अलग है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर
आप गवर्नमेंट सर्विस में ही क्यों जाते हैं? बहुत बार होता है कि मार्केट सैचुरेटेड था या फिर आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे कि अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें लोगों के माइंड में आती रहती हैं। तो यहाँ से मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि आपने 2007 में बीआर किया और 2014 ऑलमोस्ट 7 और 8 ईयर्स तक आप प्राइवेट प्रैक्टिस में थे। और जो मुझे पता है कि आप एक प्राइवेट फर्म जो कि वेल नोन फर्म थी उस टाइम पर, उसमें काम करते थे। उसके बाद भी ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि यार मुझे गवर्नमेंट सर्विस में जाना है? मतलब इस तरह का क्या सोचा? इवन दैट टाइम द सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस was lower as compared to the private. Yes. Then this was second last question of the interview. The panelists, okay. So they asked me, and I'm repeating. Okay. I'm trying to repeat that same answer. That I wanted to work for nation. Okay. And I'm not just saying for it for the purpose of just saying. Okay. I wanted to be a government officer. Okay. When I was in BARC also, after BARC also, I tried few other exams. Okay. And I want to serve the people. People. And I want to work on the government projects because it gives me more satisfaction. Okay. That ways and but they asked about me, my salary was more, why are you joining? Then I said I am happy. Yes. I'm happy about the salary part also, and that's it. Okay, so अच्छा है कि जो क्वेश्चन मैंने सोचा लोग सोचते हैं वो इंटरव्यू में भी आपसे पूछा बिल्कुल गया। पूछा जाता है। अच्छा, तो चलिए, आपने बताया कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, तो अब लास्ट क्वेश्चन क्या था, क्योंकि आपको याद जरूर होगा। तो अपने आप बताइए कि लास्ट क्वेश्चन क्या था जो उन्होंने पूछा। लास्ट क्वेश्चन उन्होंने दे आस्क्ड अबाउट माय फैमिली। ओके। So at that time it is interesting. My wife was expecting, and the due date was next day only of my interview. Great. So I just told them this thing that after interview I am leaving for my house as this scenario is there. And one of them stand in and shook hands with me and said best wishes. And those were the last line in the interviews, and then I exited the gate. And from there I was very positive about it. And it was raining heavily. So आपको मतलब क्वेश्चन, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छे से रहा, मुझे जितना भी आपने बताया बहुत अच्छे से पूरा निकल गया। It was calm. You should maintain smile and maintain calmness, and most importantly you should look at the face. Okay. On the lips. Okay. Not the eye contact. Okay. There is a difference between looking at people's face. Okay. So in such interviews, when the person is at a very, very high elite position than yours, you should never look into the eyes. Okay. You should see what they are saying. What they are saying. Okay. So it gives you more time to think what the answer is, what they are saying, and in what tone, what facial expressions they are saying. They are saying. Yes. And the answer, what tone they want. What tone they want. And the tone should be very, very subtle. You are not imposing anything. Okay. Do not impose your thoughts on them, because they are already very learned persons. Okay. And do not hurt their egos at all. And agreeing and disagreeing is a acceptable norm, but in a very subtle terms. So almost जो मेरे क्वेश्चन थे लगभग हो चुके हैं, तो मैं लास्ट क्वेश्चन आज का लेता हूँ। What are your words of wisdom for architecture students, architecture and planning students, young architects who are preparing for architecture examinations and who are looking for the service? So what do you want to say there? The final I words. want to say that be committed to your syllabus first of all, in your graduation degree or master's degree. And what I learned, that none of the subject which we think is sociology hai, the English part, the building materials, none of the subjects is I must say is lesser than the design part. You should give equal importance to all the subjects, and maintain a continuity in your preparation,
if you keep yourself updated daily in terms of your syllabus, in terms of your curriculum, you need not to put a very strong efforts in your final examinations. Okay. And one thing I would like to say, that be updated about the National Building Codes 2016, because they will help you in the examination also, written examination, and sometimes in the interview and in the career. In the career also. In journal, journal advice. That's it. Okay. It was great, and we are really thankful, sir, for your time and valuable inputs. I hope these will be helpful for young architects and architecture and planning students who are keen to join service. Thank you, sir. Thank you, Yogendra.